Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So after all of the revision जितनी हमने अभी की है ट्री की terminologies को थोड़ा सा देख लिया है साथ साथ we have made our way from k nearest neighbors on to decision trees. So now having all of the background with us, now we are ready to understand what decision trees are and how they're used for classification and regression both. So let's begin. So these are some of the resources that I've used in order to create these lectures on decision trees. I would especially like to point out this lecture series by Viktor Levrenko. So he has explained everything about decision trees and covered a lot of details in his specific style where he covers everything very concisely and in very short videos. So these are like each video is around like 5 to maximum 10 minutes, but like in an hour or hour and a half you get a pretty good idea of what the decision trees are all about and their pros and cons and everything. So highly recommended if you really want to go into the mathematical details of decision trees, of which we would be covering some of it as well. So this is then highly recommended by Kenyon Weinberger. So these are actually videos 28 and 29 in his YouTube playlist. And then finally, StatQuest by George Starmer. I have basically relied upon these excellent videos for explaining and bringing out some of the concepts. And then when I'll discuss information entropy, I'll talk both based on this video from Khan Academy and some perspectives based on this video from Josh Starmer. So yeah, let's begin. So just to quickly recap, अभी तक का हमारा सफ़र ये रहा है कि हम के नियरेस्ट नेबर्स को देख रहे थे जहाँ पे हमारी assumption ये थी कि similar inputs lead to similar outputs. So points, data points which are close to each other in their input space, in the space of their input features, they should also be close to one another in their output space. So similar inputs, similar outputs. Now the problem with that was that you had to compare each test point against all training data points in order to figure out the k nearest neighbors. So इसकी हमने एक enhancement देखी थी KD trees, the k-dimensional trees की form में, where instead of looking at all of the data points, आप किसी तरह से इसके close के जो data points हैं, near neighbors जो हैं, उनको किसी तरह separate करने की कोशिश करते थे. So what you did was you defined a tree and going over all of the features, all of the attributes one by one, हम पार्टीशन करते जाते थे हाफ हाफ के अंदर पूरे इनपुट स्पेस को. सो फॉर एग्जांपल यू have it like this and like this. So median के अराउंड by having I mean median के अराउंड split. आप split करते चले जा रहे हैं. आपने let's say feature x1 पे split किया, फिर feature x2 के ऊपर आपने split किया, एक split यहाँ पे आ गया, एक split let's say यहाँ पे आ गया. You keep splitting until you are left with like these smaller quadrants or hyper quadrants or whatever you want to call them. And once you are there, then there was a high probability कि for a test data point positioned here इसके nearest neighbors यहीं कहीं मिल जाएंगे. और जब वो नहीं मिलते थे तो हमने फिर एक और मेथड देखा था कि जिससे हम पीछे जाते थे और फिर इन वॉल्स के पीछे देखते थे कि कोई नियर नेबर वहाँ छुपा हुआ तो नहीं है. Now one thing that we learned from KD trees was कि अगर हम इस तरह से के डिमेंशनल ट्री को डिज़ाइन करें कि इस लीफ लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये प्योर हो जाए, यानी यहाँ पर जितने डेटा पॉइंट्स आए उनका लेबल सेम हो. लेट्स अज्यूम there is just one label 1 here and there is a label 2 here and then there is a label 3 here and there is a label 4 here. अगर इस किस्म की हमें प्योरिटी मिल जाए तो तब टेस्ट डेटा पॉइंट x को आपने सिंपली ट्री के साथ लेकर आए और वो इन कट ऑफ्स की बेस के ऊपर जहाँ भी पहुंचा वही लेबल इसको असाइन कर दिया. अगर हम यहाँ तक पहुँच जाएं तो this structure would be known as a decision tree. So हमने बेसिकली के नियरेस्ट नेबर्स की assumption को उठाकर इस पॉइंट तक पहुँचा दिया कि अगर यहाँ पर कोई confusion रहे ही ना, यहाँ नियर नेबर देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है नियरेस्ट नेबर्स, क्योंकि हमारा ख्याल है कि यहाँ पे पॉइंट्स के जो इनके लेबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. लेकिन अगर लेबल्स हैं ही सेम या देयर इज़ अ वास्ट एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल majority of the labels in each leaf are the same, even then we can just do voting and assign the test data point the label of the most frequent vote in that leaf. So ये हमारा pathway था from k nearest neighbors to decision trees. यहाँ by the way regression भी हो सकती है. अगर यहाँ पे points जितने भी हैं उन सब की values एक दूसरे से close enough हैं, यानी variance कम है, तो उस point पे हम खाली यहाँ पे average निकाल कर
सो द एवरेज लेबल, इन सारे पॉइंट्स का एवरेज ले लें और उस एवरेज को असाइन कर सकते हैं एज द लेबल फॉर द टेस्ट डेटा पॉइंट. सो आपने ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एक नज़र में तो फ़ौरन ही देख ली है कि ये किस तरह से आगे जाकर होगी. Now let's start by looking at a very real and a very practical everyday problem जो आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी दफ़ा पेश आई होगी. हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को स्टडी करना शुरू करते हैं. The problem is, why do chickens learn decision trees? So we want to help a chicken decide whether they should study decision trees or not. So हम करते ये हैं कि हम माजी में उन सारे चिकन्स का डेटा इकट्ठा करते हैं जिनको ज़िंदगी में कभी भी इस डिसीजन की ज़रूरत पड़ी हो कि दे शुड स्टडी डिसीजन ट्रीज और नॉट, और उनके बारे में हम लेट्स से बहुत से एट्रीब्यूट्स जमा कर लेते हैं. लेट्स अज्यूम हर चिकन से हम उसकी एज भी पूछ लेते हैं, उसके फेदर्स का कलर भी पूछ लेते हैं, उसका हम लेट्स अज्यूम वेट भी पूछ लेते हैं, उससे हम ये भी पूछ लेते हैं कि क्या वो लेट्स से क्रेजी है या नहीं है, क्या वो एमएल में अच्छा ग्रेड चाहता है या नहीं चाहता है. लेट्स अज्यूम ऑल ऑफ दीज चिकन्स आर टेकिंग एमएल एज अ कोर्स. सो इन सारे चिकन्स का ये डेटा हमने इकट्ठा किया और फाइनली हमने ये भी मालूम कर लिया कि वेदर दे स्टडीड डिसीजन ट्रीज और नॉट. सो आउटपुट लेबल भी हमारे पास है कि उन्होंने डिसीजन ट्रीज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे. ऑल राइट. सो जब इस सब डेटा को हमने इकट्ठा कर लिया तो नाउ वी लुक एट बेसिकली द कोरिलेशंस बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट लेबल्स, और उसकी बेस के ऊपर वी ट्राई टू फॉर्म अ ट्री. और हमारा गोल ये है कि किसी तरह से हम ऐसा ट्री बना लें कि जिसमें सारे के सारे येस वाले जवाब किसी एक लीफ में चले जाएं और नो वाले जवाब किसी और लीफ में चले जाएं. Once we're done with this exercise, and manually so, we create a tree. And this is, let's assume this is the tree that we get. So the first question that we ask here is that, and a chicken asks itself, is that, am I a crazy chicken? And if it's a crazy chicken, then it should not study decision trees. So sorry about that, but yeah, you can't, referring to the chicken. And then if it's not a crazy chicken, then it asks another question: do I want an F grade in ML? And if it does want an F grade in ML, then it should not study decision trees. But if it does not want an F grade in ML, then it should certainly study decision trees. So now, given this information, we have this nice tree, and we have created this tree based on this actual data. Let's say 10,000 chickens, and out of those 5,000 did study decision trees. They all ended up here, and 3,000 did not study decision trees because of this reason, and 2,000 did not study decision tree because of this reason. All right, so now you have a very simple decision tree in front of you. By the way, one of the most elegant things about a decision tree is that it's a highly explainable machine learning model. Like it's a model जो कि आप किसी भी novice को जिसने ज़िंदगी में कभी machine learning या even computer science भी ना पढ़ी हो उसको भी सिखा सकते हैं. So this is usually a model जो कि client के सामने किसी भी problem को explain करने के लिए कि how does my machine learning algorithm work, ये explain करने में बहुत कारआमद होता है. Similarly जो explainability का एक मसला है machine learning में, you don't, so most of the modern machine learning algorithms and models like deep neural networks are not very explainable. Usually they are black box models. So ये चीज़ decision trees में नहीं है. Decision trees is one of the most easiest to use and to understand models. It has its own shortcomings. It's not a very good machine learning model. अभी मैंने शुरू किया और मैंने साथ ही इसकी बुराई कर दी. It's not a very good machine learning model. However, इसमें कुछ tweaks करके we can convert it into an excellent and amazing machine learning model, जिसकी हम आगे जाकर बात करेंगे. तो खैर ये पहली चीज़ आ गई ना. जितना कुछ भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस सब कुछ को हम एक बहुत आसान सी लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. और बिकॉज यू आर ऑल कंप्यूटर साइंस, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद कंप्यूटर साइंस, और आप में से ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रखते हैं, so you understand basic logic. So we can basically express this whole tree, at least the true part of it, and the true part of it is where the chicken does need to study decision trees. By the way, this is a decision tree about studying decision trees, so that is an interesting aspect of it. But yeah, it's a decision tree about whether or not you or chicken should study decision trees or not. So so you can write it in the form of logic as, because it was not a chicken, no, it was not crazy, and it did not want an F grade in ML. So these are the two reasons added by this conjunction of operation. So these two reasons, if both of them are true,
then the chicken should study decision trees. So basically हम आगे जाकर देखेंगे कि decision trees implement disjunctive normal form, और ये भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं. और disjunctive normal form has the capability that it's a universal approximator. So we'll look at that. All right, next problem for us. And now we go into the domain of bees. So to be or not to be a machine learner bee is the question. So and now once again हम उन सारी बीज का डेटा इकट्ठा करते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में कभी मशीन लर्निंग पढ़ने के बारे में डिसीजन करनी पड़ी, टू बी और नॉट टू बी, और वो उनके बारे में हमने बहुत से एट्रीब्यूट्स जमा किए. उन एट्रीब्यूट्स के बाद हमने उनकी कोरिलेशंस देखी, कौन से एट्रीब्यूट्स वाकई लिंक्ड हैं उनकी इस डिसीजन मेकिंग के साथ, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी फॉर्म अ ट्री and we get this tree. So the first question here is for the bees is that, do I like to have fun? So if the bee does not like to have fun, then it should not study machine learning. That's clear. So if you're not into fun, you're not into machine learning. But if it does want to have fun, then we ask another question: do I like CS? Do I like computer science? Because machine learning, after all, would require you to do some amount of programming, some amount of computer science. If you don't like computer science, then you should not study machine learning. But if you do like computer science, then the next question is, what's the main motivation for studying machine learning? Now we have a set of motivations. If the bee wants to do a PhD in data science, then yes, it should study machine learning. If it's looking for a high-paying job, it should study machine learning. If it's wanting to upskill itself, it should study machine learning. But if it wants to run for a mayor, then yeah, it should not study machine learning. Probably there are better things it should be doing at this point if it wants to run for a mayor. So this is now our simple decision tree. Once again मैं आपको कहूँगा पॉज करें और इस डिसीजन ट्री को डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, यानी एंड्स और ऑर्स की मदद से इसको लिखने की कोशिश करें. पॉज इट एंड देन रीजॉइन मी. सो इस ट्री के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है कि नोड्स के सिर्फ 2 ही चाइल्ड नहीं है. यहाँ पर बेसिकली एरिटी अब आपकी 4 के ऊपर चली गई है आखिरी इस वाले नोड की वजह से. बट या ट्राई टू राइट इट इन डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. Okay, hopefully आपने pause किया, and this is what you have reached. So take ML if you like to have fun and you like CS, and one of these three, you want a PhD in CS in data science, or a high-paying job, or to learn a new skill. So it's basically now a combination of ands and ors, conjunctions and disjunctions. We can write it in the language of logic like this. So, and I've just abbreviated it this a little bit. So like fun and like CS and either PhD or pay or skill. And we can just open it up and write it in the DNF, in the disjunctive normal form, which is like the sum of products form. So like fun and like CS and PhD, so basically this pathway, or like fun and like CS and high pay, so basically this pathway, like fun and like CS and upskill, so basically this pathway. If it's either one of these three, if it's any one of these three, then it should study machine learning. So that's for this reason these decision trees become like highly intuitive. इनको पढ़ने के बाद समझना बहुत आसान होता है, very explainable, and secondly बाज़ दफ़ा बाज़ models graphically इतना easy to explain नहीं होते. Like if you have multiple dimensions, multiple features, तो अब जब आप उसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो आप वो हाई dimensional ग्राफ में नहीं शो कर सकते कि decision making किस वजह से हो रही है. Whereas in a tree, each dimension is essentially a level in the tree. So you can very easily show it, even like for 100 dimensions, you can still show it in a meaningful enough way कि decision making किस तरह से हो रही है, and someone can basically trace a path through the tree to the right leaf where the decision was actually made. So you can read the concise description of what makes an item positive just off the tree, and there are no black boxes. So that's one of the really big plus points of decision trees. And as we said, it's distinctive normal form. अगर किसी भी वक्त आपको लॉजिक में एंड और नॉट तीनों के ऑपरेशंस मिल जाए, तो हम उससे कोई भी फंक्शन जो है वो लॉजिकल फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. नॉट बाय द वे इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट आस्किंग द ऑपोजिट क्वेश्चन. सो हैविंग अ स्किल का नॉट करना हो तो नॉट हैविंग अ स्किल का क्वेश्चन पूछ लें, एंड नाउ इट्स बेसिकली अ नॉट ऑफ having a skill. ठीक है जी. So I hope you're all with me. I hope यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, और I hope आपको ये काफ़ी easy लग रही है. Now let's get into a really serious example.
All right, जी. So अब इस example के अंदर we'll try to understand several concepts about decision trees, both in terms of classification and regression. So assume, and by the way, this is a completely made up example. This data is completely made up. ये कोई real scientific study से नहीं आ रहा है. Just created it. So यहाँ पर आप देख रहे हैं basically several input features. So we have input features: age, blocked arteries, height, gender. The BMI, and now we're trying to predict these two things. So whether the person with these features, whether they have heart disease or not. So the labels are yes or no, and the threat level. So I just defined this new variable, which is a percentage. So it goes from 1 to 100, or in fact like 0 to 100, where we are just giving the threat level. So how much, what's the threat level of this person, कितना ज़्यादा इनकी सेहत को खतरा है. So ये एक बड़ा सिंपल सा डेटा है. एज में हमने एक्चुअल नंबर्स लिखे हुए हैं. ब्लॉक्ड आर्टरीज yes और no, कैटेगोरिकल हैं. हाइट जो है अगेन एक रियल नंबर हमारे पास एट्रीब्यूट है, एंड इट्स गोइंग फ्रॉम 5 feet to आई थिंक 6 feet के अराउंड जा रही है. इंचज़ के अंदर है यहाँ पर. जेंडर मेल फीमेल है, और BMI के अंदर वी हैव these different values. By the way, just to remind you, obesity, I think it starts at around 30 BMI, and then बाकी आपने फीचर्स देख लिए हैं. Now what I want you to do is video pause करें and take me seriously on this one, because this is really an important step in your learning of decision trees. Use this data and create a decision tree. Now what you're looking for is, you should try out different input features and try to figure out ways of splitting the data in a way so that you have pure or almost pure leaf nodes. यानी सारे एक तरफ हार्ट डिजीज़ येस चले जाएं, दूसरी तरफ नो चले जाएं, और थ्रेट लेवल्स जो हैं वो चलें, आप उसको फिलहाल छोड़ दें. आप पूरा ट्री जो है वो हार्ट डिजीज़ के हिसाब से बना दें, इन दो लेबल्स के हिसाब से, और फिर देखें कि क्या आपका ट्री बनता है. So I hope कि आपने pause किया. I hope you have played with this. Now let me basically start revealing to you one possible way in which you can basically create a tree for this. और again अभी हम manual trees बना रहे हैं, लेकिन इस manual बनाने में ही हम सीखेंगे कि automatic trees की training हम eventually कैसे किया करेंगे. ठीक है जी. सो पहली चीज़ हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इस डेटा को अगर आपने मेरी मशवरे पे अमल करके गौर से देखा है तो आपको नज़र आ गया होगा कि ब्लॉक्ड आर्टरीज एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर लग रहा है हमें हार्ट डिजीज़ का. बाय द वे, आप कहीं और से भी शुरू कर सकते थे. हो सकता है आपने जेंडर से शुरू किया हो या BMI से शुरू किया हो. But anyhow, blocked arteries जो है वो भी एक interesting indicator है. तो let's try using blocked arteries. So we use blocked arteries, and obviously there are two options. हमने अब ये सब के सब को blocked arteries को यहाँ red जहाँ जहाँ blocked arteries no है उसको कर दिया है, और green मैंने कर दिया है जहाँ जहाँ blocked arteries आपकी yes हैं. So now you can see here कि there are no blocked arteries and there is no heart disease. Perfect. Blocked arteries yes, no heart disease, so that's a problem. Blocked arteries yes, heart disease yes. Blocked arteries yes, heart disease yes. Blocked arteries no, and that's a problem. There is heart disease. Blocked arteries no, and there is a problem. There is heart disease. Blocked arteries yes, there is no heart disease. There's a problem here as well. Blocked arteries no, there is no heart disease. Blocked arteries yes, there is heart disease. Blocked arteries no, there is no heart disease. So except for the circles, I think we're pretty much clear about the distinction that when arteries are blocked, then people are likely to have a heart disease. When arteries are not blocked, they are less likely to have a heart disease. So I think it looks like a good first attribute to split the data on. So let's do that. Let's split the data. So we have the yes and no. First, let's go towards the yes side. And now just look at these attributes. So the ones in green, and you can see here that except for the ones that I've circled, so this one and this one, except for these, everything else has already fallen in line. So but for these we need a different variable. So is there anything else which is common for these two? So we can see, if we look across the features, we can see that the gender feature is common in both of them. So which is kind of saying that if a person has blocked arteries and they're a male, then they have a heart disease. But if a person has blocked arteries and they are a female, then they don't have heart disease, at least based on this data set. So let's do that. We present gender as an attribute, divide it, and we find that so here I've basically used these 1 and 2 as labels. So you can see here that these two data points and this data point go here,
and this data point and this data point goes here. So I just pause the video here, try to absorb what we're saying here. So now we have, and by the way, this is a pure split. So we have all no's here and we have all yeses here and so on. Now, what happens on the other side? What happens on the other side of the board? So when the blocked arteries is set to no, if we just look at the red ones here, we find that in the red ones, these circles are presenting to us an exception to the rule. Other than that, whenever the arteries are not blocked, a person does not have a heart disease. So now, is there a second variable that may help us at this point to basically make the data further pure, because we have yeses and nos both here. So we want to make the data further pure. So we want somehow to, if we would have reached like all yeses here or all nos here, we would have stopped. But yeah, let's see what other variable can help us. So maybe we can try using gender again. So for these yeses, we see that we have all females, and for the no's, we have all males. So let's see if that works for us. So no and no, no and no. I'm just double checking it. No and yes, no and yes, and we have no and no. All right. So let's divide it on gender, male and female. So now, if you just look at this, you will find that for these two females, despite having so they don't have blocked arteries, but they still have heart disease. So these two females, they don't have blocked arteries, they still have a heart disease. But why? Is there any other variable amongst them which is telling us? Because we do see a female here who does not have heart disease. So if we just go by male and female here, this will not perfectly segregate. And if we just count how many how many data points reach at this point, so we can just count amongst the red ones, how many females do we have and what's the heart disease situation. So we have 1 female, 2 female, and 3 females, out of which 2 have heart disease. So we have yes is equal to 2 and no is equal to 1. So we don't have a perfect segregation. For the males, on the other hand, if we see this male does not have heart disease, this male does not have heart disease. So there were just 2 males here, and both of them do not have heart disease. So we have reached a perfect segregation. So for the males, we are perfectly fine. This and this, they don't have heart disease. All right. Now, how about these females? Can we find another attribute to further divide these 2s and the 1s to, like, if we want to split them to 2 different sides? So if you look at the BMI, and why am I able to do that? Because I created this data. So you would obviously need to eyeball everything like height and age and everything. But if we look at the BMI, we find that amongst the females, the ones who have BMI which is high, they're likely to have heart disease. And if your BMI is not in the obese range, then you don't have heart disease. So after this observation, and because BMI is a numerical variable, so you cannot just have categories here, you would need to define a threshold. So roughly defining the threshold could have been anything including and above 22 or including and below 37. That would have been fine. But we have just taken some a value which is in the middle. So I've just taken it to be 30, also knowing that 30 is the limit for the obese. So there is other knowledge which is going into this tree. You do not need to put that knowledge in, and you could have easily defined the threshold to be 22 or 37. However, just to make this tree more generalizable, and you understand the concept by now, it probably would have been better if you would have taken an average of 22 and 37 and just placed the point somewhere in the middle, which would have come close to 30. All right, so now we can just define yes and no, and we find that we get a perfect split. There is just 1 no here, and there are 2 yeses here. So we have our table. Now, how do we use this tree to basically do classification and regression? So let me just rub off whatever I've written here, just make the tree a little bit cleaner so that we can start using this tree to meaningfully do classification and maybe some regression as well. All right. Okay. So
let's bring up a few test data points, and I've actually revealed the first one in my hurry, but yeah, you would basically calculate it on your own. So if you look at this data, the first data point is saying age is 25. We don't find any 25 in our test data. By the way, in our training data. By the way, notice that we have created the whole tree, which perfectly separates data. So we have प्योर लीव्स, किसी भी लीफ के अंदर yes no mix नहीं है. But there are variables that we have never used. We have never used age, we have never used height, and we so these are the two variables that have not been used. So trees की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक implicit feature selection हो रही होती है. The features that do not matter get removed from the tree. और जब हम automatic training trees की देखेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि features वाकई automatic training में भी remove हो जाते हैं, and only the features that matter, that correlate with the output, remain in the tree. So there is a feature selection going on here. अच्छा जी, तो अब हम ये देखते हैं कि age 25 है और blocked arteries का status ये है. So if we start with the blocked arteries, हम इस data point के लिए यहाँ पहुँचें, और यहाँ पहुँचने के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा मेल फीमेल का. So it goes to the male side. When it goes to the male side, we have a clear decision that this person does not have heart disease. अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हम ये निकालना चाहें कि इनका थ्रेट लेवल क्या है, तो अगरचे इस ट्री को हमने ग्रो रिग्रेशन के हिसाब से नहीं किया है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से किया, हमने थ्रेट लेवल के हिसाब से इसको ग्रो नहीं किया, बट स्टिल वी कैन यूज दिस ट्री to find out the threat level for at least based on the vote of all of the people who are here. और वो सारे लोग कौन कौन से हैं जहाँ जहाँ मैंने 5 लेबल किया हुआ है. So this data point and this data point, इन दोनों का अगर हम एवरेज लें तो that comes to be 48. अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आप ज़रूर नोटिस करें कि जो आपका ट्रेनिंग डेटा था वहाँ पे इन दोनों मेल्स की BMI बहुत हाई थी, जबकि आपके टेस्ट डेटा में BMI बहुत लो है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये थ्रेट लेवल किसी और चीज़ की बेस पर आ रहा हो, ये थ्रेट लेवल आपकी हार्ट डिजीज़ की बेस पर ना आ रहा हो. तो अब क्योंकि ये ट्री मैंने ग्रो किया था एक डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से, लिहाजा इट्स नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर द रिग्रेशन ऑन थ्रेट लेवल. अगर आपने थ्रेट लेवल का ट्री बनाना है तो आपको दोबारा से ट्री बनाना पड़ेगा जो कि रिग्रेशन ट्री होगा, और उसके अंदर हम जो ये प्योरिटी ढूंढ रहे हैं ना, वो प्योरिटी के बजाय वेरिएंस होगी. सो हम ये आगे जाकर देखेंगे कि हम प्योरिटी के फंक्शंस क्या यूज़ करते हैं. सो विल बेसिकली कम अप विद वेज of quantifying categorical purity of nodes, and also we will come up with mechanisms of measuring the spread or the dispersal from the mean in case of regression in a node. So वो nodes जो कि ज़्यादा compressed outputs प्रोड्यूस कर रहे हों, जिसमें स्प्रेड कम हो, वो वाला स्प्लिट्स अच्छे होते हैं, वो स्प्लिट अच्छे नहीं होते जिसमें लाइक द वैल्यूज आर ऑल ओवर द प्लेस. सो ये हम देखेंगे, बट एनी हाउ जस्ट टू पॉइंट इट आउट हियर दैट दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड एस्टिमेट फॉर द थ्रेट लेवल, बट एनी हाउ. Now for the second tree, और मैंने इसका भी आंसर रिवील कर दिया, but yeah, it's very simple. You can just go down the tree. Blocked arteries are yes, and male is yes. So that clearly means that this person has heart disease. और अब ये जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है ना, वहाँ वहाँ ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इस नोड के अंदर हैं. इन सब का एवरेज ले लें तो आपके पास थ्रेट लेवल निकल आएगा, which comes to 64.33. All right, for the next data point, the blocked artery status is no. So we come here again, and the gender is female, so we go here, and the BMI is greater than 30, so we come here. So it means that this person has heart disease. और इसमें जो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ये दो हैं, इन दोनों का आप एवरेज ले लें तो you will get 87.5 as the threat level. अच्छा, एक और चीज़ आप ये नोटिस करें, यहाँ तो हमने सारे के सारे लीव्स को प्योर कर लिया था. बाय द वे, एक और ट्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इसमें वेरिएबल्स ऐड करते चले जाएं तो आप कंप्लीट प्योरिटी तक हमेशा पहुंच सकते हैं, इनके अनलेस योर डेटा हैज़ इनकन्सिस्टेंसी. डेटा इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है कि सेम सेट ऑफ इनपुट्स के लिए एक दफ़ा लिखा हुआ है येस और एक दफ़ा लिखा हुआ है नो, यानी ये सब के सब सेम है, यही सब रिपीट कर दें, एक लेबल येस के साथ है एक नो के साथ, ये इनकन्सिस्टेंट डेटा, ये नॉइज़ इन द डेटा ऐसी होती है डेटा के अंदर. लेकिन बारिंग दिस नॉइज़, इस नॉइज़ को हटा दें, इसके अलावा इफ़ यू डोंट हैव सच इनकन्सिस्टेंसी, यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू ग्रोइंग योर ट्री until you reach 100% accuracy or zero error on your training data. Is that a good thing? ये अब आप अपने आप से पूछें, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये अच्छा है कि ज़ीरो एरर आ जाए हमारा ट्रेनिंग डेटा के ऊपर. प्रॉब्ली नॉट, बट यू शुड नो द रीज़न, और यही चीज़ असल में ट्रीज़ को, इस सबसे बड़े प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगी. बट एनी हाउ,
So that's about अच्छा हाँ, so मैं जो बात कर रहा था जहाँ से निकली थी वो थी वोटिंग वाला मसला. तो यहाँ तो हमने प्योर तक पहुँचा दिया, लेकिन लेट्स अज्यूम आगे जाकर हम ये सीखते हैं कि नहीं नहीं, हमें बिल्कुल प्योर नोड्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेहतर है कि हम कहीं ऊपर ही रुक जाएं. तो फ़र्ज़ करें किसी नोड के अंदर आपके पास 3 येस हों और 2 नो हों, तो यू कैन ऑलवेज डू वोटिंग एंड से कि जी इसका जो लेबल है वो येस होना चाहिए इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन. सो अब आपने ये पहला ट्री देखा है जिसके अंदर आपने ट्री को सॉर्ट ऑफ खुद से ग्रो भी किया है और उस ट्री की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं, और उस ट्री को ऐसे ही रिग्रेशन के लिए यूज़ कर लिया. ऑल्दो इट्स नॉट अ रिग्रेशन ट्री, इट वाज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिग्रेशन, बट इट इज़ डूइंग रिग्रेशन बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स जो कि इसके लीव्स के अंदर मौजूद हैं. ठीक है जी, लेट्स लुक एट येट अनदर एग्जांपल. अच्छा, ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी ही है जैसे पिछली थी, तो मैं चाहूँगा कि इसमें अब आप खुद थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मेहनत करें. यहाँ पर वी जस्ट वांट टू फिगर आउट बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेयर. लेट्स अज्यूम हिज नेम इज़ अशरफ. अशरफ की हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है कि अशरफ टेनिस खेलना पसंद करता है, एंड वी जस्ट वांट टू फिगर आउट बेस्ड ऑन 10 डेज ऑफ हिज हिस्ट्री कि वो एक पर्टिकुलर डे पे टेनिस खेलेगा या नहीं खेलेगा. सो आवर आउटपुट एट्रीब्यूट इज़ वेदर अशरफ विल प्ले और नॉट. And the inputs are we are looking at the day number from where we started observing. We're looking at the weather on that day, which could be sunny, cloudy or rainy. There are three options here: categorical variable. The temperature, which could be hot, mild or cool. Humidity, which could be high or normal, and the wind, which could be weak or strong. Now what I want you to do is to basically take this data, pause the video, create a tree. दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो दी जाती है ट्रीज को समझाने के लिए. सो इसको ढूंढिएगा नहीं, इसको पहले सॉल्व करें, खुद से इसका ट्री बनाएं. यू विल नॉट कम अप विद मे बी द सेम ट्री दैट आई विल, बिकॉज देयर आर मेनी ट्रीज दैट कुड बी मेड हियर. एंड बाय द वे इसके अंदर भी हम आगे जाकर देखेंगे कि परफेक्ट ट्री वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है. हम ग्रीडीली ही अपने ट्रीज को बनाते हैं, इवन जब हम एल्गोरिथमिकली करते हैं. ऑल कम्बिनेशंस को देख के परफेक्ट ट्री बनाना जो है दैट्स टू कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव टू बी फिजिबल. सो लिहाजा चलें अब इसको देखें और ट्री बनाएं. So I hope आपने pause किया. I'm about to reveal the tree now, one possible tree. So here we can see that weather is a good indicator for us. Weather जब हमारे पास sunny, cloudy और rainy three possibilities हैं, और अब मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा इसके अंदर, आप अपने तौर पे खुद वीडियो पॉज करके इसमें ढूंढते चले जाएं. लेकिन weather जब cloudy है, जब भी weather cloudy है, अगर मैं खाली इसको मार्क कर दूँ, तो इन तीनों केसेस के अंदर we find that Ashraf always plays tennis. So यहाँ तो हमें purity मिल गई. So we have 3 yeses and 0 no's on cloudy. So we have reached a pure node. So we're done here. In sunny we have 2 no's and 1 yes, and in rainy we have 3 no's and 1 yes. So we are getting better. The distribution is skewing to in one direction. And basically आगे जाकर जो हमने impurity functions देखने हैं वो basically skew को ही capture किया करेंगे कि क्या complete केओस है कि इक्वल नंबर है दोनों साइड के ऊपर, या कुछ ऑर्डर है, किसी एक तरफ स्क्यू जाना शुरू हो गया. सो हम बेसिकली इसको ही मेजर करने के प्योरिटी या इम्प्योरिटी फंक्शंस आगे डिफाइन करेंगे. बट या ओके, सो लेट्स लुक एट दोज टू साइड्स और उनको फर्दर हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से कि सनी के अंदर हम ह्यूमिडिटी को देखते हैं, एंड वी फाइंड कि जब ह्यूमिडिटी हाई है तो अशरफ नेवर प्लेज. देयर आर 2 नोज एंड 0 yeses, एंड व्हेन इट्स नॉर्मल देन अशरफ डज प्ले. सो ह्यूमिड सनी डेज में अशरफ खेलना पसंद नहीं करता, लेकिन नॉर्मल सनी डेज में वो खेलना पसंद करता है, और क्लाउडी डेज में वो खेलना पसंद करता है. ऑलराइट, एंड ऑन विंडी डेज, अगर हम रेनी से नीचे जाएं, ऑन विंडी डेज वी फाइंड दैट इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड ही नेवर प्लेज, इन केस ऑफ अ वीक विंड अशरफ डज प्ले. सो अशरफ हमें कोई इतना ज़्यादा हिम्मत वाला बंदा नहीं लग रहा. हवा तेज़ है तब भी नहीं खेलता, बारिश वाला मौसम है हवा तेज़ है नहीं खेलेगा, बारिश वाला मौसम है हवा तेज़ नहीं है तो खेल लेगा, क्लाउडी है सन नहीं होना चाहिए, क्लाउडी है तो खेल लेगा, और सनी है तो फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So yeah, not a very enthusiastic player by the looks of it, but yeah, that's Ashraf. Now we can basically look at some test data and figure out कि इस टेस्ट डेटा के लिए हमारे रिजल्ट्स क्या आते हैं. सो for the first one the weather is cloudy, so we have a clear decision that Ashraf will play. For the second one the weather is rainy and the wind is strong, so Ashraf will not play. So it's a very clear decision
in both cases. So now ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम कहीं पीछे रुक जाते, लेट्स से इस पॉइंट पर रुक जाते या इस पॉइंट पर रुक जाते, तो हम वोटिंग से डिसाइड कर सकते थे ट्री को और ग्रो करना। अगर हम रोकना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जी हर लीफ के अंदर मिसाल के तौर पर एक्स नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से कम नहीं हो सकते, हम सिंगल डेटा पॉइंट्स की बेस पे डिसाइड नहीं करेंगे जैसे यहाँ करना पड़ रहा है या जैसे यहाँ करना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा डेटा पॉइंट्स चाहिए। तो वी कुड हैव स्टॉप्ड एट अ हायर लेवल इन द ट्री, और हम बिल्कुल आखिर तक जाने की ज़रूरत नहीं थी, एक शैलो लेवल पर हम रुक जाते और फिर वोटिंग कर लेते। और ये हम आगे जाकर देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। द फीचर्स कुड ऑल्सो हैव बीन रियल वैल्यूड, जैसे आप पीछे देख कर आए हैं कि उसमें हम थ्रेशोल्डिंग कर सकते हैं। द ट्री डज नॉट नीड टू बी बाइनरी, दैट्स वेरी क्लियर, यहाँ पर हमारा कोई बाइनरी का वो नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि बाज़ डिसीजन ट्री के एल्गोरिदम्स हैं, ऑल्दो कि शायद हम इस डिटेल में ना जाएं, लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो प्रेफर करते हैं दैट दे क्रिएट अ बाइनरी ट्री एंड देन दे फर्दर स्प्लिट द एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये बात इससे पहले भी की थी कि अगर हम ट्री को बढ़ाते चले जाएं तो हम परफेक्ट एरर या परफेक्ट एक्यूरेसी तक जा सकते हैं। सो अब यहाँ पर अच्छे ट्रीज कौन से होते हैं? वो जो परफेक्ट ट्रीज होंगे वो असल में क्या होंगे? पॉज करके अगर आप उसका वर्ड ढूंढें तो वो ओवरफिटेड ट्रीज होंगे, ओवरफिटेड टू द ट्रेनिंग डेटा की नॉइज तक को फिट करके उसको आंसर करेक्ट करवा रहे होंगे। सो लिहाजा इस किस्म के ओवरफिटेड ट्रीज हमारे ट्रेनिंग टेस्ट डेटा के ऊपर अच्छे नहीं चलते, अनसीन टेस्ट डेटा के ऊपर। लिहाजा वी प्रेफर द शैलोएस्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सिंपलेस्ट। अगर एक ही एट्रीब्यूट आपको ऐसा मिल गया जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल दिए या मैक्सिमम बेहतरी कर दी, फॉर एग्जाम्पल वेदर पे आपने खाली इसको डिवाइड कर दिया, शैलोएस्ट ट्री दैट गेट्स द जॉब डन, तो ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है। बाय गेट्स द जॉब डन we mean that we reach a decent enough validation data accuracy or decent enough performance on the validation data। ठीक है जी, तो अब आप ये दो एग्जांपल्स देख चुके हैं ट्री की, जिसको आपने पूरी तरह से होपफुली अपने हाथ से सॉल्व कर लिया है। हाउ अबाउट दिस, हम शैलो ट्रीज ढूंढ रहे हैं ना, हाउ अबाउट वी स्प्लिट ऑन द डे? इट्स शॉर्ट स्वीट एंड परफेक्ट, जस्ट एक ही स्प्लिट के अंदर, क्योंकि हर दिन में या तो अशरफ खेल रहा है और या वो नहीं खेल रहा, तो लिहाजा डे पे स्प्लिट किया एंड यू आर डन। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? पॉज करें और सोचें क्या प्रॉब्लम होगी इस ट्री के साथ, क्यों नहीं हम ऐसे कर सकते? नहीं कर सकते, बाय द वे आई होप आप यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे कि ये अच्छा एट्रीब्यूट नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि वाह ये तो सोचा ही आपने ये था, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर इंट्यूशन अबाउट क्लासिफायर्स। बट या मुझे बताइए, इसमें दो मसले बताएं मुझे इस चीज़ के, कोई सोच के। अच्छा जी, आपने पॉज किया। पहला मसला तो ये है कि जब आपके टेस्ट डेटा आएगा तो वो अब इन 10 दिनों का तो नहीं आने लगा, क्योंकि ये 10 दिन तो आप ऑलरेडी ट्रेनिंग में यूज़ कर चुके हैं। उस टेस्ट डेटा के दिन कोई और होंगे, और वो दिन एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे आपके इन ब्रांचेस के अंदर। सो देयरफॉर योर ट्री हैज़ नो वे टू गो, सो योर ट्री इज़ नॉट यूजफुल। बेसिकली आप डिस्कार्ड कर देंगे उस ट्रेनिंग टेस्ट डेटा को। आप ये कहेंगे कि ये आउट ऑफ वोकैबुलरी मेरे पास आ रहे हैं इसके अंदर इंस्टेंसेस, लिहाजा मैं इस पर कोई भी आंसर नहीं कर सकता, ना येस ना नो। ठीक है, पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि दिस इज़ वेरी क्लोजली फिटेड, दिस इज़ ओवर फिटेड टू द ट्रेनिंग डेटा, कि हर डे में उसने क्या किया, डे नंबर आपने कभी से भी शुरू कर दिया। इट्स अ वेरी arbitrary attribute. We don't know which day we started from, whether it was a weekday or a weekend, whether it was a cold day or a warm day, whatever. We don't know, like we don't know the characteristics of the choice of the period जिसके अंदर ये सैम्पलिंग की गई है। So लिहाजा that is a very random attribute। लेकिन अब ये तो ठीक है, आप तो अपनी अकल से शायद ये ना करें होपफुली, लेकिन जब आप ऑटोमेटिकली ये कर रहे होंगे तो आपका सिस्टम इस किस्म के एट्रीब्यूट्स को ढूंढ लेगा, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर प्योरिटी एंड दिस एट्रीब्यूट हैज़ लेड टू अ वेरी प्योर स्प्लिट। सो इसको हमें किसी तरह से रोकना पड़ेगा। जब हम ऑटोमेटिक ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे तो इस किस्म के स्प्लिट्स को रोकना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ओवरफिटिंग। दिस ट्री इज अ परफेक्ट क्लासिफायर फॉर द ट्रेनिंग डेटा बट विल नेवर वर्क फॉर एनी न्यू डेटा, बिकॉज जाहिर है वो इन 10 दिनों का तो नहीं होगा ना। सो वी वुड नीड वेज टू प्रिवेंट सच ट्रीज फ्रॉम हैपनिंग, एंड वी डू सो बाय डिस्करेजिंग लीव्स विद वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। सो splits which, so any attribute which results in a lot of splits, each having very small amount of data in it, सिंगलटन्स जैसे इस केस में है, ये हमारे लिए बेकार होगा। सो हम इसको किसी तरह डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे एंड विल कम अप विद मैथमेटिकल वेज ऑफ बेसिकली डिस्करेजिंग सच फॉर्म्स ऑफ स्प्लिट्स। अच्छा जनाब, आपको बायस और वेरिएंस की हमारी डिस्कशन तो होपफुली याद होगी। इससे पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। बायस इज द एरर दैट कम्स फ्रॉम रॉन्ग मॉडल assumptions which do not allow an algorithm to learn all patterns from the training data। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बट द मॉडल इज कमिंग विद द assumption कि ना ये एक लीनियर सेपरेशन करना चाहता है, कि लीनियर फिटिंग करना चाहता है। लेट्स अज्यूम इट्स रिग्रेशन, तो लीनियर फिटिंग करना चाहता है, तो लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहा है इसके ऊपर।
That's not a good assumption. Your algorithm is highly biased towards a particular assumption or a presumption about the spread of the data, which was incorrect. So this is underfitting, it's a high bias error. Whereas on the other side of the spectrum, on the other end of the spectrum, are the variance errors, where you have really perfectly fitted the training data and even fitted the noise in it. So except for this point and probably this point, you have fitted everything else. So now even if you get a test data point here, 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 following the same pattern as the data, you'll be getting errors. So lihaza, this is overfitting. This has fitted even the noise in the training data. So that's not a good classifier. There is a third source of error as well, which we call the irreducible error. ये वो होता है जो आपके ट्रेनिंग डेटा के अंदर नॉइज की वजह से आता है. सो ट्रेनिंग डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है. सो जिसकी हमने एग्जांपल देखी थी, सेम इनपुट्स लेकिन आउटपुट्स जो हैं वो उसकी मैच नहीं कर रही, या फिर आपके पास इस किस्म के हैं जो डेटा पॉइंट्स इनकरेक्टली मार्क हो गए, गलती से कुछ लग गया जिसकी वजह से नॉइज आ गई. ये वो इररिड्यूसिबल एरर्स हैं जो आपको क्लीनिंग में अगर साफ नहीं करके आए इसको डेटा क्लीनिंग में, तो ये अब नहीं रिमूव हो सकते. Your overall error of your classifier is basically a sum of these three forms of errors. इसकी specific form तो ये है कि it's bias square plus variance plus irreducible error. लेकिन अब ये क्यों ऐसा है ये किसी और मौके पर डिस्कस करेंगे. But what you see here in this diagram is that when you start training your classifiers, and here you have the error, your variance error is very low. You have low variance and you have very high bias. So for example, इस किस्म की situation में, and as you continue training it, the variance continues to increase and the bias continues to go down until you reach some sweet spot, which gives you something like this, which is a good enough fit but not an overfitting. And from here onwards, the variance climbs and the bias continues going down, but the overall error continues to climb. So therefore हमने यहाँ कहीं स्वीट स्पॉट के ऊपर रुकना होता है, और आपको मालूम है कि इसके लिए हम वैलिडेशन सेट्स यूज़ करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करते हैं. देयर आर मेनी अदर वेज जो हम बार बार डिस्कस करते आए हैं, जिससे हम जो है वो बायस वेरिएंस के ट्रेड ऑफ को मैनेज कर सकते हैं. So high bias usually leads to underfitting and high variance usually leads to overfitting. The total error also depends on the irreducible error, which is noise that cannot be reduced by the algorithm. Our ultimate goal is to minimize the total error. अच्छा जनाब, अब ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रीज के बारे में, मुझे ये बताइए कि हाइट के साथ आपको कोई बायस वेरिएंस का रिलेशनशिप लगता है. सो शैलो ट्रीज या शॉर्ट ट्रीज, क्या ये ज़्यादा बायस्ड होंगे या इनमें ज़्यादा वेरिएंस होगी? टॉल ट्रीज में क्या ज़्यादा वेरिएंस होगी या ज़्यादा बायस होगी? पॉज करें, सोचें, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. So decision trees are indeed sensitive to splits, because छोटी सी चेंज भी ट्रेनिंग डेटा में आ गई तो हो सकता है आपका पूरा ट्री का स्ट्रक्चर बदल जाए, अगर हम बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग टू द ट्रेनिंग डेटा की बेस पर ट्री बना रहे हैं. सो ये तो है, लेकिन व्हाट्स द रिलेशनशिप? सो द रिलेशनशिप इज दैट शैलो ट्रीज हैव हाई बायस. दे आर वेरी सिंपल, दे आर टू सिंपल, सो दे अंडरफिट द डेटा. और वही हमने देखा है कि शुरू में ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे स्प्लिट्स मिल रहे हों, हो सकता है नीचे जाकर वो कहीं आपकी येस और नोज में कोई पैटर्न आना शुरू हो, या आपकी डिफरेंट क्लासेस में कोई पैटर्न आना शुरू हो. So they underfit and they have very low variance. They perform poorly on everything. So they have low variance. But deeper trees, taller trees have high variance. They have a chance of overfitting the training data, and they have a low bias. ठीक है, वो कुछ भी पहले से एजम्पशन नहीं लेकर आ रहे, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग डेटा को पूरी तरह फिट कर दिया. सो दे आर हाईली बायस्ड. सो इस किस्म का कोई रिलेशनशिप बनता है. जो हम एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी पिछली स्लाइड में कह रहे थे, वो चीज़ हमारे केस में ट्री की डेप्थ है. सो ट्री की डेप्थ जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम ये देखते हैं कि इनिशियली तो ट्रेनिंग एरर और टेस्ट एरर दोनों नीचे आ रहे हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वन ऑफ देम starts climbing, which is the test error, and the training error keeps going down to arbitrarily low values. जहाँ तक भी irreducible noise जाकर उसे रोक देगी, बस वो वहाँ पर जाकर रुकेगा, वरना वो it has the potential of going down to zero. ठीक है, तो ये वो sweet spot है जिसको हम ढूंढ रहे हैं ट्री की हाइट का. और यही ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप इसको ट्रेन करते चले जाएं तो ये हाई वेरिएंस वाला एक क्लासीफायर बन जाएगा, ओवरफिट कर जाएगा. इस वजह से जनरली ये हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता अनलेस वी कम अप विद वेज ऑफ रिड्यूसिंग द बायस एंड द वेरिएंस. So we can always add levels to perfectly fit any training data and even model the noise, unless जो हमने कहा कि data set ही अगर inconsistent है, instances have different labels for the same inputs. So जब ये हो जाती है overfitting, तो this leads to high variance. The output varies a lot for real world test data,
and the leaves may just be singletons in them. ये एक और रीज़न है कि जब इतना ज़्यादा ट्री को आप परफेक्शन तक पहुंचा देंगे तो हर लीव में हो सकता है एक एक दो दो नोड ही पड़े, एक एक दो दो डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हो, तो उनकी बेस पे डिसीजन वैसे ही आपका कोई बहुत ज़्यादा रोबस्ट डिसीजन नहीं होगा. यू आर जस्ट बेसिंग इट ऑन द ओपिनियन ऑफ, जैसे के एन एन में के इज इक्वल टू 1 पे आपको बहुत हाई वेरिएंस मिलती थी, बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत हाई वेरिएंस मिलेगी. सो जो सॉल्यूशंस इसके हैं जो आगे जाकर डिस्कस होंगे इंशाल्लाह, उसमें ये है कि वी रिड्यूस द वेरिएंस यूजिंग बैगिंग. सो रैंडम फॉरेस्ट इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे. सो बैगिंग इज इसेंशली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन, इसकी हम बात करेंगे. एंड बायस को हम रिड्यूस करते हैं यूजिंग बूस्टिंग, सो जिसमें एडा बूस्ट भी यूज होती है, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज भी होते हैं. विल सी कि हमारे पास कितना वक्त है और हम इसमें से कितना कुछ कवर कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दिस डिस्कशन ऑन ट्रीज विल गिव यू अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. अच्छा जनाब, थोड़ा सा हम जल्दी से बस देख लेते हैं कि इस पूरे ट्री को हम इफ एल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो वी हैव अ ट्री हियर जो कि दो रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के साथ डील कर रहा है, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के साथ डील कर रहा है. x2 है, x2 को हमने ग्रेटर देन 5 कहा है, और ये सिंपली ये इस f के साथ कॉरेस्पॉन्ड, इफ के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और इस else के साथ बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. सो अब यू कैन सी हियर कि दैट इन योर ग्राफ दिस इज द लाइन विच इट हैज़ प्रोड्यूस. तो इसने स्प्लिट कर दिया है x2 के अराउंड हमारे पूरे डेटा सेट को, और येस और नो में चला गया. और उसके बाद येस और नो के अंदर यू कैन फर्दर सी कि ये वाली साइड है जो x ग्रेटर देन 5 को डील कर रही है, जहाँ पे हम 2 वाला चेक लगा रहे हैं. सो इसेंशली दैट इज दिस वन. और ये दूसरी वाली साइड है जो x ग्रेटर देन 8 को डील कर रही है. एंड यू कैन सिमिलरली सी दोज थिंग्स here as well. तो ये x1 के आपके splits हैं. So the whole tree could be represented just like this. और आप ये partitioning of the input space भी देख रहे हैं कि tree किस तरह से partition करता चला जाता है. If there would have been a third dimension तो वहाँ पर फिर split होता है and so on and so forth. Numerical attributes की एक और बात भी याद रखिएगा कि ये repeat भी हो सकते हैं. कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स डाउन द ट्री रिपीट नहीं हो सकते. सो अगर आपने फॉर एग्जांपल वेदर पे स्प्लिट किया है और लेट से इधर माइल्ड आ गया है, अब यहाँ दोबारा वेदर पे स्प्लिट नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें आई हुई हैं जो वेदर, जिसका वेदर माइल्ड है तो उसका हमेशा एक ही चाइल्ड निकलेगा. वेयर एज इफ़ यू हैव अ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट x2 ग्रेटर देन 5, इस पे आपने स्प्लिट किया है और इधर ग्रेटर देन 5 आ गया है, तो आप दोबारा x2 लेट्स से ग्रेटर देन 9 का एक और यहाँ चेक लग सकता है, और इधर भी दोबारा लेट्स से x2 आई डोंट नो ग्रेटर देन 3 का चेक लग सकता है, व्हाटएवर. सो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स सेम ब्रांच के अंदर रिपीट भी हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं. कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स जब ट्री में एक दफ़ा आ जाते हैं तो वो दोबारा बार बार फिर नहीं आ सकते, उनके आने का वो मीनिंगफुल नहीं होता उनका दोबारा से रिपीट होना. ये बात याद रखिएगा. फॉर ईच स्प्लिट वी आर क्रिएटिंग दीज एक्सेस अलाइंड हाइपरप्लेन्स जो आप देख सकते हैं ऊपर डायग्राम के अंदर. और फॉर रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वी नीड टू डिफाइन थ्रेशोल्ड्स. ये आप इससे पहले भी देख कर आए हैं कि यू नीड टू डू थ्रेशोल्डिंग. और थ्रेशोल्डिंग यूजुअली जब हम ऑटोमेटिकली करने की तरफ आएंगे तो हम ये देखेंगे कि वी नीड टू एसेंशली look at all possible splits. So for example यहाँ split करें डेटा सेट को और देखें कि दोनों साइड पे वेरिएंस कितनी है, या अगर हम इसके नतीजे में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो दोनों साइड के पे प्योरिटी कितनी है. फिर उसके बाद इस और इस डेटा पॉइंट के बीच में रखें, फिर उसके बाद अगले दो डेटा पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें उसके बीच में रखें, एंड कीप मूविंग the plane throughout the data set and see कि कहाँ पे आपको सबसे बेस्ट स्प्लिट मिल रही है. अब वो बेस्ट की डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के केस में प्योरिटी होगी और रिग्रेशन के केस में लो वेरिएंस होगी. ठीक है, इन द चिल्ड्रन नोड्स. अच्छा जी, अब हम क्विकली, क्योंकि हमने वो डीएनएफ की बात की थी, तो बूलियन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं. मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहूँगा. सो एंड को एक दफ़ा देखते हैं. एंड में आपको मालूम है कि आउटपुट तभी सिर्फ 1 होती है या ट्रू होती है जब बोथ इनपुट्स ट्रू हों. सो वी कैन सी कि ए को अगर ऊपर रखें, ए इज़ ट्रू, बी इज़ ट्रू, सो वी गेट ट्रू. ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, वी गेट फॉल्स. ए इज़ फॉल्स, वी गेट फॉल्स. एंड सिमिलरली इसको बी ऊपर रख के भी कर सकते थे और वही रिजल्ट निकलते. सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर और. I'll let you basically look at it and convince yourselves. And we can do it also for exclusive OR, where you have कि अगर दोनों false हों या दोनों true हों तो we get a false. So false, 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 true, true, false, and then for other cases we get true. And you can also see the splitting of the space here. For example ये AND function है और आपको space यहाँ split होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से हमारे each cut के लिए. और by the way यहाँ पर numerical thresholds लगाकर इसको solve किया हुआ है. You don't have to. इसको आप categorically भी कर सकते थे, numerically भी इसको solve कर सकते हैं. तो this is an example where you have basically एक categorical attribute है लेकिन number line पे exist करता है, तो उस पर threshold लगा के भी उसको आप solve कर सकते हैं. All right. Now let's quickly talk about regression before moving on. So अगर आपके पास ये एक regression problem है, you want to see the effectiveness of a drug,
और आपके पास ये ग्राफ आ रहा है जहाँ पे ईच डेटा पॉइंट ये शो कर रहा है कि इसको कितने मिलीग्राम ड्रग दी गई थी इस डेटा पॉइंट को लेट से, और वो कितनी इफेक्टिव रही थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो नाउ इस डेटा सेट के लिए आप बड़े आराम से एक लीनियर रिग्रेशन की लाइन फिट कर सकते हैं। क्लियरली लीनियर ट्रेंड है, जितनी ज़्यादा दवाई देंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ये वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा कि फॉर्मूला। इट प्रॉब्ली डज नॉट वर्क विद मैनी सॉर्ट ऑफ रियल मेडिसिन। बहुत ज़्यादा दे देने से यू कैन ईजिली ओवरडोज और उसका नुकसान हो सकता है। सो लिहाजा उसकी इफेक्टिविटी या कम हो सकती है, इट कुड बी लेस इफेक्टिव और इट कुड इवन बी हार्मफुल। So अब हम एक real data set देखते हैं. This is again coming from an example from by George Stammer, StatQuest के ऊपर. बहुत अच्छी example है. So I'm using a similar example. I've basically taken the motivation for that. But if you look at the StatQuest, तो आपको बहुत similar वहाँ पर example नजर आएगी. All right. So this is a more realistic example. So here you see that for really low dosages of the drug, you don't get a lot of effectiveness. But and for very high, very overdose, आपको कोई इतनी effectiveness नहीं मिलती. But there is a sweet spot of around like 40 to 50 milligrams of drug for which you get almost 100% effectiveness. And then if you slightly overdose, it still gets you good enough effectiveness. But now how do we do regression using this? So एक काम तो ये हो सकता है कि हमें आंखों से नजर आ रहा है, हम इसका ट्री तो बड़े आराम से बना सकते हैं. So हम let's say इसका और इसका एवरेज ले लें और जहाँ कहीं वो एवरेज आए एक प्लेन यहाँ डिफाइन कर दें. उसके बाद इसका और इसका एवरेज लेके एक प्लेन यहाँ डिफाइन कर दें. और मैं हाइपरप्लेन्स कह रहा हूँ इन लाइंस को, एंड यू नो वेरी वेल क्यों. और इसका एवरेज लेके यहाँ कहीं प्लेन डिफाइन कर दें और इसकी मदद से हमारा ट्री बन जाए. सो लेट्स डू दैट. सो हियर वी हैव दैट ट्री. सो इफ डोजेज इज लेस देन 31.5 मिलीग्राम तो हम इस साइड पे आ गए. And we just take the average effectiveness of all of these data points, which comes to around 3.6%. So ये हमें ये साइड मिल गई. अगर 31.5 से ज़्यादा है तो लिहाजा then we come over to this side, and here we ask the question about the second threshold, and we say कि अगर ये 55 से कम है तो हम perfect sweet spot में हैं, हम इसका average लेते हैं and we get this. If you go on the other side, which is like less than this 80.5 milligrams, और आप इस पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो अगर इससे लेस हैं तो you're still in a good enough zone. अगर इससे ज़्यादा हैं तो overdose हो गया. Now let me rub the clumsy lines that I have drawn and replace it with more nice looking lines which I have in the animation. So this is your first threshold, which is defined for this. This is your second threshold defined for this, and basically आप साथ साथ जो कर रहे हैं, ये जो black lines नजर आ रही हैं ये averages हैं. And then this is your third threshold defined here, and you take the average, which comes to around 65%, and then finally on the other side the average comes to 5.6%. So this is how manually you create this tree. If on the other hand you would have been creating this tree automatically, और अब यहाँ पे हम इतनी अच्छी position में हैं कि I can actually give you a pretty good idea of how that is done. So the way you do this when you want to do this automatically is that you initially take the average of the first two data points and position your plane here. And now you take the average on both sides. So यहाँ एक ही point है, इसकी average यही होगी, 0 ही होगी, और यहाँ इन सब की average लेंगे तो वो यहाँ कहीं आ जाएगी. And now you know the average, you know the mean, so let's call it y bar, and now you find the difference of each data point from this y bar. सब डेटा पॉइंट्स का आपने इससे डिफरेंस निकाल लिया. सो बेसिकली दिस इज आपने ये डिफरेंसेस आपके पास आ गए, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि डिफरेंसेस अब दोनों डायरेक्शंस में, कभी पॉजिटिव हैं कभी नेगेटिव हैं, तो इसे हमें किसी तरह से ऑल पॉजिटिव करना पड़ेगा. वन ऑफ विच इज यू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर लॉसेस. सो आपने ये सारे लॉसेस निकाल लिए, इन लॉसेस को आप सम करें. सो बेसिकली योर लॉस इज योर वाई आई फॉर द ith data point minus y hat, y bar, which is your average, and you take the square and you do it for the entire side, entire child. So एक जो जिसको हाइपरप्लेन दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और फिर बेशक आप चाहें तो इसका सम स्क्वायर्स पे रहने दें या आप इसका एवरेज निकाल लें जितने डेटा पॉइंट्स इस साइड के ऊपर आपके पास है. दैट्स योर वेरिएंस, राइट. सो आपने दोनों साइड की वेरिएंस निकाल ली, और उसके बाद once you're done you rub it
you rub this whole thing. No, I rub this whole thing. You don't do that in your algorithm. And then you place the hyperplane now between the next two data points. और फिर दोबारा वही process repeat होगा इस side पर भी, इधर भी mean निकलेगा, इधर दोबारा sum of squares दोनों तरफ निकलेंगे. You find the losses and you can keep plotting the losses for all of these hyperplanes. You can keep plotting the variance. So essentially आप variance plot करते चले जाते हैं और वो आपके पास let's say different points के लिए different variance आती है आपके पास. So and in the end जब आप अपना hyperplane यहाँ से move करते 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 आखिरी दो data points के बीच में ले आए और आपने फिर इसके split की variance ढूंढी, तो आप ये कहते हैं कि अच्छा मेरी सबसे कम variance let's say यहाँ कहीं आई थी, तो लिहाजा वो मेरा सबसे अच्छा split था जिसके ऊपर मेरी value आ रही थी, तो लिहाजा I just stop here. ठीक है, ये आपको पहला split मिल गया and then you move on like that. You find the second split, the third split and so on and so forth. So अब आपकी इस split के बाद दोनों साइडों के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ hyperplanes को move करेंगे, यहाँ भी hyperplanes को move करेंगे और you have a variance threshold जिस पे आप जाकर रुक जाएंगे. तो ये हम आगे जाकर देखेंगे कि जब ट्री को ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग अगला ही टॉपिक है जिसमें हमने इसको देखना है. बट दिस इज अ वेरी आई वुड से अ प्रीटी एक्यूरेट आइडिया ऑफ हाउ वी गोना डू दैट. अच्छा, अब अगर आपके पास एक न्यू डेटा पॉइंट, एक टेस्ट डेटा पॉइंट आए, तो वी कैन जस्ट सिंपली टेक इट डाउन द ट्री. सो इट्स 70 मिलीग्राम डोजेज. बाय द वे द सेम पैरामीटर, ये एक ही हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट था. So you take the 70, it's greater than 31.5, so you come here, it's greater than 55, you come here, it's less than 80.5, so you come here. So it's 65% effective. So that's pretty simple and straightforward. So we'll stop here. This is the basic introduction to the decision trees, and we have used them for classification and regression both. Now in the next set of videos, we're going to look at mechanisms of training decision trees, and some of those mechanisms are really interesting. So कुछ हम वहाँ पे digress भी करेंगे अपने main मौजू से और कुछ इधर उधर की चीज़ों को भी साथ साथ समझेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. See you in the next video.